जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स। आज हम अक्टूबर के महीने के बाद जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं मार्केट में, इकोनॉमिक फ्रंट पे एक आउटलुक सेशन के साथ हाजिर हैं। मेरे साथ शऊर तुराबी हैं, एक्टिंग हेड ऑफ रिसर्च, सैयद शिराज अली हेड ऑफ फिक्स्ड इनकम, शब्बीउल हसनैन इक्विटी फंड मैनेजर। सो ओवर टू यू शऊर, आप स्टार्ट कर लीजिए। Assalamualaikum everyone. So we're back again with the economic outlook for the month of October. We'll primarily be covering the month of October और क्या क्या developments रही थी उस month में. Obviously हमने देखा कि जो हमारी local market है, equity market especially, उसमें confidence return होता हुआ हमें नजर आया, जो कि obviously अभी भी continued है और मार्केट ने नए हाईज अब मार्केट टच कर रही है. ऑब्वियसली विल बी डिस्कसिंग कि किस तरह से मार्केट के नए हाईज जो आज हैं और जो 2017 में हमने एक्सपीरियंस किए थे उनमें क्या डिफरेंसेस हैं. बट आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड tensions in the equity market by the participants, लोगों ने इसके बाद अब पार्टिसिपेट करना शुरू किया है और हमने देखा कि इक्विटी इंडेक्स अक्टूबर में 12% मार्केट मंथ ओवर मंथ अप्रिशिएट की थी. और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है PKR अगेंस्ट USD, उसने भी अप्रिशिएट किया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. ऑब्वियसली पॉलिटिक्स के एंड पर जो पॉजिटिव न्यूज़ रिसीव हुई थी कि 8 फरवरी को इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो गई थी, जिसकी वजह से मज़ीद कॉन्फिडेंस मार्केट में प्रिवेल किया. एंड IMF का रिव्यू जो कि अब तक कंक्लूड हो चुका है, उसके ऊपर भी, क्योंकि मार्केट में जाहिर है ये इंडिकेशंस थी कि हमने जो इस दफ़ा के सारे टारगेट्स थे वो मीट कर लिए थे. सो द मार्केट वाज वेलकमिंग ऑल ऑफ दीज डेवलपमेंट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मार्केट में प्रिवेल कर रहा था. उस कॉन्फिडेंस का एक और रीजन ये भी था जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे. तनवीर साहब, इफ यू कुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जी. सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनका एक मीटिंग में उन्होंने जो स्टेटमेंट इशू होता है उसमें उन्होंने कहा था कि सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स ऑन अ 12th मंथ लुक फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस, जिसकी वजह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स को दोनों मार्केट्स में, फिक्स इनकम मार्केट्स में और इक्विटी मार्केट्स में, पार्टिसिपेंट्स का ये जो व्यू था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो पीक आउट हो चुके हैं, वो काफ़ी हद तक मटेरियलाइज हो गया था स्टेटमेंट के बाद. जिसके बाद फिर हमने देखा कि ज़्यादा इक्विटी मार्केट ने भी परफॉर्म किया और सेकेंडरी मार्केट्स में भी हमने स्लाइट डिक्रीज देखा यील्ड्स में. राइट. इसके साथ साथ MPC ने इस चीज़ पर भी फोकस किया कि जो इनकी प्रोजेक्शंस हैं और जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं वो दे आर लार्जली इन लाइन विद व्हाट the SBP was projecting before, right? So be it inflation और current account, ये दोनों चीज़ें, और इसी के साथ साथ जो फिस्कल अकाउंट्स पब्लिश हुए थे उसमें प्राइमरी सरप्लस was also a very promising number. So all of these developments were fueling the confidence in the market, जिसकी वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि लेट्स कीप द इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड एट 22%. और उसके बाद एज एंड व्हेन जब फॉरवर्ड ट्रेजेक्टरी को देखते हुए विच द स्टेट बैंक इज एक्सपेक्टिंग इन्फ्लेशन टू बी ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, और उसके बाद फिर वो timely steps लेंगे in line with the monetary stance that they are taking. If you could move on to the next slide, sir. Right. So inflation. Inflation has been the one of the major culprits of our economic stress during the last few quarters. हमने देखा कि इन्फ्लेशन जो है वो हिस्टोरिक हाई इन्फ्लेशन ने टच किया था इन द मंथ ऑफ मई, एंड देन इसके बाद फिर इन्फ्लेशन ने
हाई बेस इफेक्ट की वजह से इन्फ्लेशन अब एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पर कंटिन्यू है। वी आर एक्सपेक्टिंग के इन्फ्लेशन अपनी इस डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी को आने वाले मंथ्स में कंटिन्यू रखेगा। With the first half of FY24, we expect inflation to average around 28%, which should be reducing to just close to 20% in the second half of fiscal year 24. और इसके बाद फिर from July to December 24, the number should, improve to mid-teens, or even, on the lower end of mid-teens. So around 12 to 13% average should be inflation numbers in the first half of fiscal year 25. So based on these projections, what SBB is saying, forward-looking basis per 12-month forward-looking basis per real interest rates are positive. It makes sense. Because we can see high base effect की वजह से inflation should continue its downward trajectory, and that would translate into a positive real interest rate. Right. So next slide, please. Right. On the current account side, we recorded a current account deficit of $950 million during first quarter of fiscal year 24. Primarily, this was owing to, a decline in imports, and obviously a favorable decline in the trade deficit. For full fiscal year 24, we expect current account deficit to remain well within the, to remain well contained, owing to the demand disruption, which is expected to continue. Obviously, we expect demand to increase, but very gradually, right? So, lower imports and improvements in remittances should contribute to our current account deficit, a lower current account deficit, and we expect it to range close to $5 billion for the year. Obviously, we don't have much space in our forex reserves to run large current account deficits because a major portion of our external financing requirements go to the to the external debt repayments, right? We are expecting remittances to increase from, obviously we saw the number of remittances for the month of October to clock in at around $2.5 billion, which was increased from $2.2 billion recorded last month. Going forward, हम ये expect कर रहे हैं कि remittances का number भी increase होना चाहिए owing to shrinking of the gap between open market and interbank exchange rate. And policies which are favoring proper channels or legal channels. So जो हमारे expatriates हैं उनको favor किया जा रहा है if they are using the proper channel, and that shrinking difference between these two rates should bode well for the remittances in the coming months, which will help contain our current account deficit to a manageable level. On the fiscal account side, obviously we saw a primary surplus of 0.4% of GDP during first quarter fiscal year 24. Right. So we expect that the tax revenues projected or budgeted for the year should be achieved during first quarter or during the full fiscal year, because of a number of factors they have taken in the last year to increase revenue collection, which include increasing the general sales tax rate, and uh, again additional measures taken to increase tax revenues, right? So we expect fiscal year 24 में we will be able to manage a primary surplus as budgeted, which is obviously also the requirement of IMF. So we have to adhere to that as well. On the fiscal deficit side, we expect fiscal deficit to be around 7% of GDP consolidated, and federal fiscal deficit to be around 7.5% of GDP, which would translate to around 8 trillion rupees.
primarily because of higher debt servicing, right? So obviously we have historic high levels of domestic and external debt, and historic high interest rates. So debt servicing would eat up a major chunk of the fiscal revenues that the government is expected to receive after the provinces are done with their shares. But again, we expect to run a primary surplus in for full fiscal year 24. Right. If we could move on to the next slide, please, Tanvir. Right. So recent gas tariff, we thought about including this as well because it's a major development. What happened is Ministry of Petroleum ने gas tariffs को increase किया है by a margin. इससे जो हमारा circular debt की accumulation है in the gas sector वो काफी हद तक कम हो जाएगी. Is what we are expecting. क्योंकि जो पहले जो हमारी average cost थी, it was around 1300 rupees per MMBTU. और जो अब जो टैरिफ नया आया है इट्स अराउंड 1400 रुपीस पर MMBTU. So it is enough to cover Pakistan's indigenous gas network issues. Obviously we still face issues of imported RLNG which is transferred to domestic users. So उस साइड पर again अभी भी थोड़ा सा deficit है as depicted by this graph. But the deficit before these tariffs were implemented was huge, as you can see with the gray bar in this graph. And now, after the increase in tariff, this deficit has reduced by a significant number. So, although we believe that the gas circular debt is not 100% dealt with, but a significant portion of it has been covered by this increase. Right. So next slide, please. Right. So last night we received this news of IMF's first review being conducted successfully. The few points that the staff mentioned, which included, continued fiscal consolidation, which would mean that achieving primary surplus. If we would achieve primary surplus, this would in turn mean that we'll have more room to retire our domestic debt. Right. Obviously, strengthening the social safety net, which includes timely disbursements of VISP, further reforms to reduce costs in the energy sector. The IMF has welcomed the increase in electricity and gas tariffs, but they are also suggesting that जो हायर कॉस्ट्स है जो एक आम आदमी के ऊपर पड़ रही है उसे कम करने के लिए IMF की सजेशन ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेट नेटवर्क की तरफ लाया जाए, थेफ्ट को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किया जाए, जो पावर परचेजिंग अग्रीमेंट्स हैं उनको फेवरेबल टर्म्स पर रीनेगोशिएट किया जाए वेयर पॉसिबल. एंड ऑब्वियसली जो IMF का एक स्टांस है कि जो कैप्टिव पावर को इंसेंटिवाइज किया जाता है उन इंसेंटिव्स के ऊपर नजरसानी की जाए. उसके बाद फिर IMF का एक और जो कंसर्न था वो ये था कि exchange rate should be market determined. Recent measures or recent moves by the authorities to control this gap between the two exchange rates has bode well. But IMF believes that exchange rates should be independent, or it should be a transparent and efficient FX market. So in addition to that, IMF has appreciated the appropriately tight monetary policy, as they said, and they are also expecting inflation to come down. On SOEs, IMF का ये व्यू था कि SOEs के लिए हायर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, एंटी करप्शन यूनिट को ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि वी ऑल नो कि SOEs is a long standing issue with the government, and obviously international partners के साथ हमारा cooperation is crucial because we are at very alarming forex FX reserves level. But nevertheless, this review has been conducted successfully, and after board approval, Pakistan is expected to receive $700 million of tranche under the current $3 billion SBA. Yeah, move on to the next slide, please. Right, so we drew a
we drew a comparison of how equity market reacts to to policy rates. और पिछले कुछ सालों का जब हमने डाटा जमा किया और हमने इसका एक कोरिलेशन बनाया, तो हमें कुछ वाज़ेह चीजें नजर आई। उसमें हमने देखा कि जब भी मार्केट ये परसीव करती है कि पॉलिसी रेट्स पीक आउट हो चुके हैं, तो इक्विटी मार्केट वहां से एक इंक्रीज लेना शुरू करती है, कि जो हमने पिछली 2-3 दफा जो ये रेड सर्कल्स हैं उसमें हाईलाइटेड है, राइट? सो this happened in late 2013, then in 2020, early 2020, and then obviously in the current spell, right? So this is what is happening. The market is expecting interest rates have peaked, and उसके बाद फिर market ने continuing on the past, market ने उसके बाद react करना शुरू कर दिया है. Now, if we could move on to the next slide, I believe we are projecting that how inflation and right. So we expect inflation to obviously decline going forward, or the downward trajectory of inflation to continue. And obviously, uske साथ साथ policy rate should also come down, right? Because we expect to maintain a real interest rate positive, but not too positive, obviously, right? So we expect policy rate to be in line with inflation and to come down in line with inflation. Now, when the SBP decides to act on it is anyone's guess. But obviously, in the larger picture, in the medium to long term, we expect interest rates to follow the path of inflation. So we have with us Syed Shiraz Ali. He is our head of fixed income. And if we could move on to the next slide, Tanvir Saab, I believe there is a yield curve which would be addressed better by Shiraz Ali. Shiraz, over to you. जिस तरह शगुन ने जो है वो काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन आउटलुक और पॉलिसी रेट की जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, और हमने ये जो एक ग्राफ आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, इसमें क्लियरली हमने मेंशन किए हैं 2 पॉइंट्स. लास्ट वन वाज 7 सितंबर 2023 and the last one is yesterday's 15 November. So you can see the difference between the yield curve. The yield curves down by approximately 3% across the board in shorter end, like 3 months, 6 months, and 12 months. And if you can see the change in the 3 years, 5 year, 10 years, it's approximately 4%, 2%, and 1.6% respectively. इस बेसिक वजह दो है, क्योंकि जो सितंबर की मॉनेटरी पॉलिसी थी, वहाँ पे काफी मार्केट प्लेयर्स थे जिनकी एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ सकता है. बट हाउएवर एसईपी एक्चुअली मेंटेनिंग द स्टेटस को स्टैंड सिंस लास्ट 3 मॉनेटरी पॉलिसीज. सो हमने देखा है कि जुलाई की मॉनेटरी पॉलिसी में भी अनचेंज रहा, जो सितंबर की मॉनेटरी पॉलिसी में अनचेंज रहा. सो एक्चुअली वो हमें इस बात पे एक क्लैरिटी दे गया था कि जो शायद पॉलिसी रेट की जो एक अपवर्ड साइकिल है वो अब रुक चुकी है, और ये हमारे रेट जो है वो पीक आउट हो चुके हैं. सिंस देन हमने काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखी, जिस तरह शऊर मेंशन रिगार्डिंग दी यूएस पीकेआर पैरिटी के ऊपर भी. तो वहां से जो है वो दो किस्म के कंफर्ट्स थे जो कि मार्केट के अंदर नजर आने लगे. एक तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आउटलुक चेंज हो गया, तो लोगों की डिमांड जो है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरफ आना शुरू हो गई, स्पेशली ऑन द लॉन्गर एंड साइड. सेकेंडली, जो हमारी डेट मैनेजमेंट हो रही थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशुएंस के टाइम पे, वो काफी स्मार्टली जो है वो शुरू हो गई. और जो लास्ट ऑप्शंस हम देख रहे हैं सिंस सितंबर, सो वहाँ पे जो है टारगेट जो है वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का यही रहा है कि वो टारगेट को जो है वो अडेयर करे. इंस्टेड के पहले हमने देखा था पास में कि टारगेट जो थे वो समहाउ इररेलेवेंट होते थे, और जो ऑप्शन सब्सक्रिप्शन होती थी वो मोर देन डबल अमाउंट की भी हो जाती थी. तो उसकी वजह से काफ़ी मार्केट हमारी कॉम्पिटिटिव हो चुकी है, और उसकी वजह से अब जो है वो यील्ड कर्व जो है वो तकरीबन कोई 2 से 2.5% जो है वो नीचे आ चुके हैं. और ये जो ग्राफ अगर हम अभी जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये हमारे पास कल तक का नंबर है. और क्योंकि कल जो टी-बिल का ऑप्शन था, वहाँ पे भी हमने देखा कि जो है वो यील्ड्स फर्दर जो है वो डाउन हुई थी प्राइमरी मार्केट के अंदर भी, और उसको आज मार्केट ने रिएक्ट किया फर्दर 50 बेसिस पॉइंट. तो मार्केट वहाँ से भी जो है वो तकरीबन कोई 50 बेसिस पॉइंट नीचे आ चुकी है. तो अब तकरीबन हमारे पास जो 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ है, दीज रेट्स आर होवरिंग अराउंड 21%. हाउएवर जो हमारे पास 3 इयर्स और 5 इयर्स के जो बॉन्ड्स हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 17% एंड अप्रोक्सीमेटली 15.8% रिस्पेक्टिवली. सो हाउएवर जिस तरह शगुन ने कहा है, और जो हमने एक अपना पैटर्न देखा है इंटरेस्ट रेट का, सो हाउएवर वी आर एक्सपेक्टिंग के रेट माइट स्टार्ट इन डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स.
और यही वजह है कि मार्केट क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस के ऊपर रेट करती है, तो वहाँ पे हमारा व्यू भी यही है कि हमें मज़ीद जो है वो यील्ड्स के अंदर जो है वो एक फर्दर टिप नज़र आता है। और यही वजह है कि एक काफ़ी अच्छी डिमांड हमें जो है हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर नज़र आई है, बिकॉज़ प्रीवियसली क्योंकि जो लास्ट हमने 1.5-2 साल का जो पीरियड था, वहाँ पे मनी मार्केट फंड जो थे वो लाइमलाइट में रहते थे। यूजुअली इन्वेस्टर यूजुअली पार्क इन मनी मार्केट फंड बिकॉज़ इट्स अ सेफ हेवन, वहाँ पे हमें एक जो है अप्रोक्सीमेटली फिक्स्ड अप्रूवल्स वगैरह मिली होती है। हाउएवर ये भी जो एक व्यू है मार्केट का सेंटीमेंट है वो चेंज हुआ है, एंड वी आर सीइंग द इन्फ्लोज इज कमिंग इन दी इनकम फंड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड एज वेल। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से जो है वो मजीद जो है वो एक काफी बड़ा गैप है, और जिस तरह शाहू ने डायरेक्शन बताई है, तो हम वी आर एक्सपेक्टिंग अप्रोक्सीमेटली अराउंड 6 to 8% policy rate might go down by the end of next calendar year. So we are expecting कि इस मार्केट के व्यू के हिसाब से जो लॉन्गर एंड फंड्स हैं, स्पेशली कन्वेंशनल साइड और इस्लामिक साइड, सो वहाँ पे जो है वो हमें काफी ज्यादा डिमांड जो है वो नजर आती है। थैंक यू। जी तनवीर साहब, if we could move on to the next slide, I believe यहाँ से हम equity market के ऊपर outlook which will be covered by Sayyid Shabir Hussain. He is our equity fund manager, and over to you. जी सभी स्टार्ट करें। आपको विजिबल हो रही है? हेलो जी, शऊर सभी हैं अवेलेबल? जी तनवीर साहब, आई गेस शायद वो मेरा कोई मैं इसमें पढ़ लेता हूँ। ओके ओके ठीक है। Tanvir sir, there's been a slight problem with my laptop, and so I'm operating from Shaur's laptop. So basically, if we look at this slide, the Fed models basically indicate that the difference between earning yields and your 10-year PIB. So basically, if the PIB is higher than your earning yields for 10 years, the sentiment is bearish. And for vice versa, it's bullish. So basically, currently what we're seeing is the 10-year earning yields are 7.5%, and the 10-year PIB is of 1.9%. So obviously, we can see that the sentiment that we are getting currently on this is bullish. As we can see, the earning yields have jumped a lot from 2021, and that is basically because of how the earnings of the companies were adjusting to devaluation and an inflationary impact, and without their earnings were actually increasing. But obviously, the concerns on the macro side, they were overplayed by the investors in most cases. So that's why the earnings were going up and prices were going down. So basically, yield was going up in that sense. And if you look at the PIB, obviously you can see the 10-year is 1.95. So obviously this slide shows that the long-term potential of PSX and what is the difference between the earning yield for 10-year PIB and earning, then that is the same thing. Next slide, please. So obviously we've talked about the re-rating aspect before as well. So currently, as you can see that 2017 to 24th May, PSX touched 52,876. It's obviously higher than that in monetary terms, but obviously in the actual terms we call it intrinsic terms, it's absolutely cheaper than that, because the PE ratio at that time was over 12, while the discount to regions what was much less than what we are having currently. The same aspect as we discussed in last slide, the fixed years of PKR devaluation, that took a big toll on everything. And obviously the companies, the as most of the companies are linked to devaluation. For example,
oil and gas sector, most of their earnings is linked to PKR devaluation. So that is a heavy weight, and it's their earnings were increasing actually. The concerns that were put on the share prices was basically due to macro factors. तो इसमें बेसिकली जो मेन फैक्टर है वो पीकेआर डिवैल्यूएशन से अर्निंग्स एडजस्ट हुई हैं और उसकी वजह से प्राइसेस ऑब्वियसली उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हुई. इफ यू लुक एट द डॉलर बेस्ड अर्निंग्स जो उस वक्त थी और अब थी तो काफी फर्क है आई थिंक, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज इम्पोर्टेड और उन्होंने पास ऑन कर दिया है काफी हद तक. तो अगर डॉलर 100 से 300 हो जाता है तो उनकी उनकी जो टॉप लाइन है मोस्ट ऑफ द कंपनीज की उनकी बहुत ऊपर चली जाती है टॉप लाइन. 5 साल में अगर टॉप लाइन हम ग्रोथ देखें जो PSX की यूनिवर्स है तो उसमें इट्स बीन मैसिव, एब्सोल्युटली मैसिव. सो तो अर्निंग्स उस हिसाब से एडजस्ट नहीं हो गई, अर्निंग्स हो गई एडजस्ट, बट ऑब्वियसली द कंसर्न वो जो मैक्रो के कंसर्न थे वो काफी लोगों ने ओवरप्लेट कर दिए हैं. तो वहां पे अगर थोड़ी स्टेबिलिटी जो अब आ गई है बिल्कुल, तो री रेटिंग आपको आहिस्ता आहिस्ता वैसी मिल रही है जो कि अभी बहुत होना बाकी है. अगर हम उस लेवल तक पहुंचना है हमें 2017 तक, जो उस वक्त ट्रेड कर रही थी जो आज ट्रेड कर रही है उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है. डिस्पाइट द फैक्ट दैट इन मॉनेटरी टर्म्स PSX is higher than what was in 2017, and the average P yield, as we can see the 10-year P, the 8-year P basically is 7.3. So the index is still way lower than that. So for that to adjust, it will re-rate in our opinion. Next slide, please. Okay, so this yes, this one. So basically, this slide tells you that if you just look at the PSX from any metric, it's cheap. It's really cheap. And obviously, this all comes down to like the devaluation that we have in last 5 years. The myth that devaluation is bad for PSX, I think it's really overplayed, because most of the companies they just pass on the impact and get the benefit out of it. So basically, if you look at market cap to GDP, it's at abnormally low level if we compare to historical. Price to book is abnormally low level, and so or other two metrics as well. So price to book, basically we can see that the companies have accumulated profit much more than what they had in 2008, and they are still trading at much cheaper. So basically, the companies have kept on earning, but they have not adjusted on the price segment. So basically, this slide basically shows you that. Please, next slide. Okay, so obviously ये भी उसी को reinforce कर रहा है कि the average discount that we had and the current discount, that is massive difference, massive. The MSCI EM, the average discount is minus 39%, and the current discount is over 65%. The FM discount, the average is minus 31, and current discount is minus 54. Obviously, this is another slide just to show that how cheaply we are trading and what re-rating could do to our market. Next slide, please. Okay, this is basically the price earning ratio of our funds. So UFSF is basically lowest. AIEF is lowest because the earnings of the ENPs are completely dollar linked, and dollar is obviously devalued a lot in the last few years. So this is why the PE, and obviously there are other factors as well why AIEF is cheap, because circular debt accumulation, and there are a lot of things like that. But obviously, when something is cheap, it's attractive. So in AIEF and UFSF, our stance is the cheapest. They are currently the cheapest right now. UFSF, because of the bank's earnings have skyrocketed in the last 2 years, and it's expected that they will grow on for the next year as well. So these two are the cheapest funds, and then we have USF, URSF, and Sharia funds. Dividend yield for the UFSF is also really 16%. Banks over the past 1.5 years have
have started paying out really well. So this is the factor why UFSF dividend yield is really high. Next slide. Right. So we have discussed at length the economic outlook and our projections. Um, we have also given some thought to how we believe कि यहाँ से market और macroeconomic fundamentals की क्या एक direction होगी. But obviously, there are some external factors which could significantly affect our projections, right? And those include first and foremost the international oil prices. As we all know, okay, the ongoing tensions between these Arab states, uh, could have an implication on the international oil prices. Although अभी तक इस तरह का कोई reaction नहीं आया है oil की market पर, but things could always change. So let's hope that this thing resolves quickly. But if something was to go wrong, international oil prices significantly affect our inflation numbers. उसके बाद फिर जो second important factor है to consider is the external flows and PKR devaluation, because these two factors are obviously directly linked. External flows, as of now, what we are told by the ministry and by the SBP is that कि जितनी हमारी financing requirements है, external financing requirements है, they are more than covered by the inflows that we have planned, right? So on the external front, we should not be worrying too much, is what we are told. But obviously, the point is कि वो सारे inflows materialize हो जो planned inflows हैं, and this would obviously reflect in our FX reserves position. Any mishap on those fronts could be severe to our forex reserves positions. Number 3 is fiscal reforms. Obviously, we saw how much delay there was in this gas tariffs increase. There is some serious need to introduce some fiscal reforms as soon as they are done. The sooner these reforms are done, the better. So any delay, any unaccounted for, unwanted delay on these reforms could trigger the ongoing SBA program as well with the IMF. So although we hope that जितना स्मूथली हमारा फर्स्ट रिव्यू निकला है उतने ही स्मूथली हमारे जो आगे के रिव्यूज हैं वो भी सक्सेसफुली निकल जाए, but any mishap on that front could also hamper our assumptions. That would be it from our side, Tanvir sir. If you have any questions. I have some questions. First question is to Shiraz. Shiraz. Hello. Shiraz, are you there? जी तनवीर साहब। जी। अच्छा शिराज, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इंटरेस्ट रेट्स की आउटलुक है, बेस्ड ऑन दैट, एक तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिएगा कि हमारे फिक्स्ड इनकम फंड, स्पेशली यूबीएल गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड और यूबीएल इनकम अपॉर्चुनिटी फंड, इसमें अभी फ्लोटर पीआईबीज और फिक्स रेट पीआईबीज की क्या पोर्टफोलियो में क्या वेटेजेस हैं, और आपके ख्याल में आगे क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या फिक्स रेट वाले पीआईबीज का एक्सपोजर इंक्रीज करेंगे या सॉर्ट ऑफ क्या स्ट्रेटजी होगी? थोड़ा सा इस बारे में बता दें। जी तनवीर साहब, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताता चलूँ कि देखिए इनिशियली तो आपको जो फिक्स बॉन्ड्स हैं उनकी इशुएंस रिलेटिवली काफ़ी कम हो रही थी, और यील्ड के अंदर गैप भी जो था वो काफ़ी वाइडन हो चुका था, जो फ्लोटर रेट पीआईबीज थे और फिक्स रेट पीआईबीज के अंदर। तो अगर इनिशियली हमने किया ये था कि हमने अपनी जो वेटेड एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी थी और पोर्टफोलियो ड्यूरेशन थी वो हमने बढ़ाई थी दो तरीकों से। एक तो हमने जो जितनी भी उसके अंदर लिक्विडिटी हमारे पास अवेलेबल थी या जो हमारा एक्सपोजर था वो मेनली हमने पार्क किया था 1 ईयर टी बिल के अंदर,
ताकि जहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होना शुरू हो जाती है इंटरेस्ट रेट कट की या एटलीस्ट यील्ड्स कर्व सेकेंडरी मार्केट में आता है, उसका बेनिफिट जो है वो पोर्टफोलियो को मिलता है। सिमिलरली जहाँ हमने कोशिश ये की थी कि जो उसमें फ्लोटर पीआईबी का पोर्शन था वो तकरीबन हमने कोई अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% जो है वो रखा हुआ था। दैट वाज मेनली इन 5 ईयर फ्लोटर पीआईबीज, बिकॉज के उसकी जो कूपन की रिसेटिंग थी वो इनिशियली काफी हाई सेट था, उसकी अगली रिसेटिंग जो है वो अप्रैल 2024 के अंदर जाके जो है वो रीसेट होगा। सो ऑब्वियसली यू विल गेट 6 मंथ विंडो जहाँ पे हम एक हायर अप्रूवल अर्न कर सके। सिमिलरली बीच में हम जो है वो ऑप्शन टू ऑप्शन बेसिस के ऊपर फिक्स बॉन्ड्स के अंदर भी एक्सपोजर ले रहे थे। हाउएवर वी वर नॉट कीपिंग इन द पोर्टफोलियो बिकॉज कि एक हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, बिकॉज के फिक्स बॉन्ड जो थे वो काफी लोअर यील्ड के ऊपर थे, तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी उनके अंदर करने की। बट हम जो मार्केट को गेज करने के लिए वहाँ पे हम ट्रेडिंग्स वगैरह काफी कर रहे थे ताकि पोर्टफोलियो के अंदर अल्फा जनरेट हो। हाउएवर अब क्योंकि मार्केट के अंदर वो एक कंफर्टेबल पोजीशन आ चुकी है, तो हमने जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्डअप करना शुरू किया है। इनिशियली वी आर अप्रोक्सीमेटली 10% इन दी फिक्स्ड रेट पीआईबीज। हाउएवर ये जो एक्सपोजर है ये ग्रेजुअली हम इंक्रीज करेंगे, बिकॉज के अब जो है वो एक कन्वर्जेंस आना शुरू हो गई है। बिकॉज के जो 1 ईयर का टी बिल है वो जब हमने इनिशियली परचेज करना शुरू किया था तो दैट वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 22.8 22.9% के करीब। राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग अराउंड 21%, तो तकरीबन कोई डिस्पाइट द फैक्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज रहा है, बट कोई 2% की जो है वो यील्ड जो है वो नीचे की तरफ आ चुकी है। तो सिमिलरली अभी जो गैप है तकरीबन 3 years पीआईबी वर्सेस 1 year टी बिल, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4%, तो इट्स स्टिल ऑन द हायर साइड। सो हम इसका कोशिश यही कर रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड जो इसकी क्योंकि कन्वर्जेंस हो रही है वहाँ पे हम अब जो है वो फिक्स के अंदर हम मूव करना शुरू करें। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो 5 ईयर का पीआईबी है, क्योंकि वो इस दफा भी नया इशू आने वाला था, तो वो ड्यू टू सम रीजन डिले हुआ है। सो नेक्स्ट वाले में जो है वो 5 ईयर्स का भी इशू आएगा, तो वी आर टारगेटिंग कि वहाँ पे भी हम 5 ईयर्स के अंदर बॉन्ड के अंदर भी एक्सपोजर लेंगे। वी आर टारगेटिंग, अगर हम एक एक्सपेक्टेड अपनी एक्सपोजर बताएं, तो वी आर टारगेटिंग के अराउंड 25 to 30% हम फिक्स बॉन्ड के अंदर होंगे, और रिमेनिंग जो है वो मिक्स होगा बिटवीन 1 ईयर टी बिल एंड फ्लोटर रेट पीआईबी। अच्छा, ये थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि 3 ईयर टेनर का जो पीआईबी है, इसमें यील्ड रिडक्शन एज कंपेयर टू अदर टेनर्स ज्यादा क्यों हुई है? सर देखिए, इसकी प्राइमरी रीजन ये है कि जब से ये इशू आया था तो आई थिंक जो लास्ट 2-3 ऑप्शंस हुए थे वो, क्योंकि मैं मैंने इनिशियल डिस्कशन में भी कहा था कि जो डेट मैनेजमेंट है वो काफी रिलीजियसली जो है ना टारगेट्स को फॉलो कर रही है। पास्ट में हमने ये एक्सपीरियंस किया था कि अगर टारगेट मिनिस्ट्री जो है या स्टेट बैंक जो है वो अराउंड 200 बिलियन का देता था और पार्टिसिपेशन अच्छी होती थी, तो मिनिस्ट्री जो है यूजुअली 400 to 500 बिलियन भी जो है वो मार्केट से उठा लेती थी। हाउएवर अभी हम देख रहे हैं कि वो काफी जो है वो एक प्रोएक्टिवली जो है वो बिट को एक्सेप्ट कर रही है। तो इस वजह से क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है, अगर हम कोई जो 3 4 5 बड़े बैंक है अगर हम उनकी बुक साइज के हिसाब से भी देखें, सो एक्चुअली उनकी एपेटाइट फुल होने में जो है ना वो आई थिंक काफी टाइम लग जाएगा और काफी बड़ी इशुएंस रिक्वायर्ड है। सो हाउएवर क्योंकि सप्लाई बहुत लिमिटेड है तो उसकी वजह से डिमांड एक सिग्निफिकेंटली आ रही है। और प्लस जो चीज शायद हम यूजुअली डिसरिगार्ड कर देते हैं, क्योंकि अब कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो हैं या कॉर्पोरेट जो हैं वो भी अब एक बहुत बड़ा पोर्शन हुआ है हमारी मार्केट का। सो उनके पास भी एक सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी और अब उनका भी एक व्यू चेंज हो चुका है, वो भी लॉन्गर एंड साइड पे आना जा रहे हैं। तो स्पेशली जब आपके पास सप्लाई साइड जो है वो लिमिटेड होती है, तो ऑब्वियसली वो डिमांड जो है वो यील्ड्स को सिग्निफिकेंटली मूव करना शुरू हो जाती है। और यही जो है वो स्पेशली 3 ईयर पीआईबी के अंदर भी हुआ, क्योंकि इसका जो लास्ट जो मैंने सितंबर का जो यील्ड कर्व दिखाया था उस टाइम पीरियड पे भी यही हुआ था कि एक्चुअली जो ऑक्शन हुआ था वो अराउंड 19.35% के करीब हुआ था, बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर यील्ड जो है वो एक्चुअली क्रॉस करके थी 20% को। बट वंस ये जो व्यू दोबारा से चेंज हुआ है तो वो पहले इनिशियली कोई 18% के करीब आ गया था, फिर अब इसका कट ऑफ ही जो है वो 17.35 17.39 की रेंज में आ गया था। सो अब वो सेकेंडरी मार्केट ने उसको, और क्योंकि स्टिल उसके अंदर जो है वो सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं आई थी मार्केट के अंदर और डिमांड सिग्निफिकेंटली थी, तो उसने और फर्दर जो है वो उसको नीचे की तरफ ले आया। और सिमिलरली जिसको हम अक्सर कहते हैं कि एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो एक्चुअली जब आपको पास जो है वो फिर एक मार्केट के अंदर सिचुएशन आ जाती है कि अगर आपको बॉन्ड लेना ही लेना है, प्लस अब आपके पास कोई नेगेटिव न्यूज रिलेटिवली ऐसी नहीं है कि नेगेटिव न्यूज जो है वो मार्केट में कोई हमें नजर आ रही है कि नेगेटिव न्यूज आएगी जो कि यील्ड्स को ऊपर लेके जाएगी। तो सिमिलरली फिर जो भी रेट्स अवेलेबल होते हैं लोगों को वही बेहतर रेट्स लगते हैं और वहीं पे वो फिर अपना व्यू को जो है बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, सिर्फ एक ब्रीफ कमेंट कि आप अभी भी ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व है, तो आप कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नॉर्मल अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व में चेंज हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर या 2025?
तनवीर साहब देखिए, फ्रेंकली स्पीकिंग ये जो इन्वर्टेड यील्ड कर्व का फिनोमेना है, ये इनिशियली तो आपको पता है कि ये जो कुछ 2-3-4 साल पहले स्टार्ट हुआ था, तो हमारे लिए काफी यूनिक था। बट आई थिंक ये हमें लगता है यही है कि जब ये यील्ड्स बिल्कुल ही जिस तरह शऊर ने प्रोजेक्शन दिखाई है कि आई थिंक 12% या 11% के हमारे पॉलिसी रेट रुकते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी द टाइम जहाँ पे हमें लगता है कि यील्ड कर्व जो है वो एक नॉर्मल शेप के ऊपर आ जाए, बिकॉज के अब जो है वो शॉर्टर एंड जो है वो ज्यादा स्पीडी मूव करेंगे। बट हाउएवर जहाँ पे हमारी एक व्यू है कि अगर लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल जिस तरह शऊर ने अपना ग्राफ प्रेजेंट किया, तो अगर वहां पे 12% या 11% पे जाके लोगों को लगता है कि दिस इज इट और दिस इज द बॉटम, सो वहां से ऑब्वियसली ये हुआ कि फिर देन जो हम यूजुअली देखते हैं कि 1 ईयर और 3 ईयर्स में कितना प्रीमियम होना चाहिए, तो आई थिंक फिर वहां से जो है वो एक जो आपका पॉजिटिव स्लोप यील्ड कर्व जो है वो हम देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली वी आर टारगेटिंग की जो अगला पूरा कैलेंडर ईयर है वहां तक तो ये हमें इन्वर्टेड यील्ड कर्व ही रहेगा। ऑब्वियसली कन्वर्जेंस विल बी देयर, हाउएवर जो दिसंबर 24 का जो हमारा टारगेट है वहां से हमें लगता है कि यील्ड कर्व जो है वो एक फिर एक पॉजिटिव शिफ्ट करना है शॉर्टर टू लॉन्गर एंड। चले अब हमारे पास वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स को मुख्तसर रखें तो आई विल अप्रिशिएट दैट। अच्छा, एक जो स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर फंड से को जो अफेक्ट कर रहा है कि जो गवर्नमेंट कैबिनेट ने मूव किया है विंडफॉल टैक्स ऑन बैंक, तो ये बेसिकली फाइनेंस एक्ट में तो ये आ चुका था, तो ये करने की क्या जरूरत पड़ी और इसका क्या हमारी ये वैल्यूएशंस में बिल्ट इन है ये टैक्स? जी तनवीर साहब, जी एक्चुअली जो अभी रीसेंट न्यूज़ फ्रंट्स पे हमने देखा कि कैबिनेट के अप्रूवल आई है इसके ऊपर। जो एक्चुअली फाइनेंस बिल में जो चीज़ अप्रूव हुई थी वही थी कि किसी भी कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू इम्पोज टैक्सेस अप टू 50% sorry, over and above any taxes that are already levied on such non-operating income, if we should say, or uh, there was a special word, I'm not remembering it correctly, but there was something that to do with the non-operating side of business, right? So uh, obviously we are seeing now this is now being on the news front. This is being floated in the ECC meeting. Actually इसके ऊपर क्या decision होता है is yet to be seen. We have tried reaching out to a couple of banks, but we haven't received any firm answer over how this is being implemented and if this is being implemented as well. So yeah, we ये are actually waiting on banks to ये थोड़ा actually क्लैरिफाई कर दीजिएगा, have ये some sort विंडफॉल टैक्स information जो on है। this, और उसके बाद फिर we'll move on. But obviously the numbers जो calculate हो रहे हैं, these numbers are not insignificant. The forex income, as we all know, that the banks have earned during the last 2 years is a significant number. So उसके ऊपर अगर 40% tax लगता है तो it's going to impact the earnings of banks, but not quite substantially. But again इसके ऊपर we are waiting कि banks जो है वो किस क्लैरिटी तरह और से होगा, ठीक। respond करते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट सवाल जो है वो आपने मेरे ख्याल आईएमएफ का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है और उसकी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, उस पर तो कमेंट कर दिया। आई थिंक उसको हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक मेरे ख्याल जो पॉइंट मिस हुआ है वो इलेक्शन रिलेटेड सेंटिमेंट, और हिस्टोरिकली इलेक्शन के टाइम पे मार्केट में क्या रैली आती है, किस तरह से ये फैक्टर्स प्ले आउट करते हैं। तो अगर उस पर कुछ कमेंट करना चाहें ब्रीफ। जी, मैं कह रहा था हेलो। तो इलेक्शन के बारे में, जो इलेक्शन फरवरी में स्केड्यूल्ड है उसके बारे में, उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट देखना है सेंटिमेंट वाइज। जी आपका अच्छा इलेक्शन सर, अगर इलेक्शन की बात करें ना तो ऑब्वियसली जो एक प्री रैली होती है इलेक्शन से पहले, वो तो नजर आती है, वो हिस्टोरिकली भी हमने देखी है। वो इवन 2000 आवाज जा रही है, नहीं जा रही? आई थिंक जी जी, आ रही है, आ रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा, प्री रैली अगर देखें ऑब्वियसली वो 2018 के इलेक्शन में हमने देखा था, उसमें भी
उसमें थोड़ी माइल्ड थी, बट ऑब्वियसली जो हिस्टोरिकल हमारे पास एविडेंस रहे हैं कोई 3-4 इलेक्शंस की, तो ऑब्वियसली उसमें एक रैली तो है। और अभी भी आई थिंक एक रैली आई है, जो उसका एक इलेक्शन भी ऑब्वियसली उसके पार्ट बहुत सारे हैं। उसमें ये है कि सब ऑब्वियसली चीजें थोड़ी बेहतर हो रही हैं, स्मगलिंग पे कंट्रोल हो रहा है, डॉलर वापस थोड़ा इनफ्लो बेहतर हो रहा है रेमिटेंसेस के, उसमें इलेक्शन भी एक पार्ट है। बट ऑब्वियसली इलेक्शन थोड़ा बहुत छुप गया है उसमें, क्योंकि अभी जो बाकी फैक्टर्स हैं वो ज्यादा प्ले आउट कर रहे हैं। तो लेकिन इलेक्शन की रैली बिल्कुल आती है, और इलेक्शंस एक ऐसी चीज है ऑब्वियसली जिसको इन्वेस्टर ऐसे देख रहा होता है कि स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म गोल्स, और कोई जैसे पॉलिसी मेकिंग या इस टाइप की चीजें आती है ना, लाइक, तो ऑब्वियसली जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो ऑब्वियसली ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, लोगों का आता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का आता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो वो अगर इलेक्शन हो जाते हैं जैसा अभी प्लान है फेब में, तो ये तो आई थिंक बहुत पॉजिटिवली लेगी मार्केट इस चीज को, इसमें तो कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी। और बस वही है कि कॉन्फिडेंस एक लोगों का आता है कि लोग अभी पॉलिसी बनाएंगे, लोग फिर उसमें जिस तरह चीजें चलेंगी आगे एक तरीके से चलेंगी। अभी क्योंकि थोड़ा अनसर्टेनिटी ये भी है ना कि लोग अभी चले आएंगे 1 महीने 2 महीने में, फिर वो क्या, बट ऑब्वियसली मार्केट ने परफॉर्म जो रिएक्ट किया उसका एक इलेक्शन पार्ट है बिल्कुल। और वो अगर जिस तरह इलेक्शन की जो डेट जो कंफर्म होती रहेगी थोड़ा आगे आगे, तो वो और उसको पॉजिटिवली लेती रहेगी मार्केट, और वो बेहतर ही रहेगा उसके लिए, जैसे हिस्टोरिकली भी हमने देखा है। ओके, थैंक यू। अच्छा, बस एक मैं कमेंट अपने व्यूअर्स के लिए करना चाहूंगा कि ये जो इक्विटी फंड्स आप सामने देख रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में कैसी रही है। तो यूबीएल स्टॉक एडवांटेज या यूबीएल स्टॉक फंड जो है, इसने जी पिछले 1 साल में कोई 36% का रिटर्न अर्न किया है, टोटल रिटर्न। whereas यूबीएल फाइनेंशियल सेक्टर फंड ने कोई 52% का रिटर्न किया है, और ये 31 अक्टूबर ऑफ डेट जी, की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अलमीन शरिया स्टॉक फंड का कोई 30% प्लस रिटर्न रहा है। और 30%। अलमीन इस्लामिक एनर्जी का 38% आई बिलीव, 1 साल का रिटर्न। बिल्कुल। जी, सो ये रिटर्न्स रहे हैं। उनका 41 रहा है असली में, ये ईएफ का एएफ का 1 41। साल के होराइजन से अगर ओके, देखें बट आप शायद आज की डेट से देख रहे एज हैं ऑफ या 15 नवंबर। 15 नवंबर, बट मैं 31 एज ऑफ अक्टूबर के 15 देखूं। नवंबर 15। ओके ओके, तो तकरीबन 38 था, और 15 ओके। नवंबर से प्रीवियस 12 मंथ्स का देखें तो जी जी। 41% जैसे सभी बता रहे हैं। तो ये इस तरह के रिटर्न्स रहे हैं। 41%। ऑब्वियसली बिल्कुल। हम व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि हम काफी अरसे से हम ये एक किस्म की कॉल ये उनको दे रहे थे कि ये बहुत चीप वैल्यूएशंस पे इस टाइम ये स्टॉक्स के पोर्टफोलियोज हैं, और इसमें जब भी रैली आएगी तो इसमें एक अच्छा रिटर्न वो बना सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया एग्जैक्टली। आप सबका। और इंशाल्लाह अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब पेज पे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिनका इंशाल्लाह हम आंसर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्मार्ट सेविंग्स विद यूबीएल फंड्स। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी